Good morning, students. I am Annu, Assistant Professor in BCA Department. I am going to teach you the subject Computer and Programming Fundamentals. The subject code for the paper is 101, and this is totally a theory paper which will clear all the concepts regarding computer and very basic programming fundamentals. Means you will be able to know how a computer works, what is the job of different parts of the computer, how a computer works in a network, how many types of languages are there, etc. etc. Before discussing the syllabus topics in detail, let us discuss the exam pattern first. The paper is of 100 marks and it is divided into two parts. 80 marks are theory marks, means these are the marks which you will earn by writing answers in the exam sheet. And 20 marks are for internal assessment, which consist of your attendance marks, assignment marks, and class test marks. You have to submit all the assignments and class test on time to get good marks in the assessment, and your behavior in the class should also be good so that the so that you can get good assessment marks. So let us discuss the paper pattern, how the paper will come. Let us discuss the paper will consist of total 9 questions. Question number 1 is compulsory and it consists of 8 short questions which will come from all the units of the syllabus. Rest of the paper is divided into 4 units that are from your syllabus, and each unit consists of 2 questions. By choosing from the 2 questions, you have to attempt only 1 question. So total questions to be attempted are 5. Means 1 is your compulsory paper question and 4 you have to attempt by choosing 1 question from each unit. So total are 5 questions. Each question will be of 18 marks. This is your exam, your paper pattern. Now let us discuss the syllabus. This is your syllabus and it is also given in the books that you are going to refer, and it is also given on MDU site. So you can get it from here and there also. Your syllabus is divided into 4 units. First unit will consist of computer fundamentals. In this unit you will get to know what is a computer, some history of computer, how the different parts of computer works, what is memory, how many types of memory are there, what are the secondary storage devices, and you will read all these topics in detail. Okay, unit number 2 will consist of computer hardware and softwares. You will read some computer hardware devices, some softwares, operating system in details, and computer viruses. Third unit consists of computer languages. You will get to know how many types of languages are there. These are the basic language types which we are going to which we will read in this paper. This is not specifically for a particular language. We will read the languages in general. Then this unit consists of how the computer program can be planned. Some basic concepts are also there. Unit number 4 is for networking, the how your computer works in network, what are basic network types, how you can transmit your data, what are the different transmission channels that you are going to use to transfer your data on internet, what is internet, what are applications of internet. That's all. This is your total syllabus.
and these are the books you can refer to your syllabus. First is Computer Fundamentals by P.K. Sinha and Preeti Sinha, and second is Computer and Programming Fundamentals by Sushil Goyal. If you are going to purchase a book, I will suggest you to purchase this one by Sushil Goyal. This book is according to your syllabus, and you will get all the topics of the syllabus in this book. Now, before discussing the computer definition, we must know the very basic terms that are used in computer. First is data and other is information. We all know that our computer works on data, but we should know what is data. So data refers to any collection of raw facts which may or may not convey any meaning. Means in simple language we can say data simple ऐसे फैक्ट्स का कलेक्शन है जिनके बारे में हमें कुछ पता है. मतलब ऐसी चीजें, कोई ऐसी पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में हमें कुछ भी पता है, वो सब हमारे लिए एक डेटा है. हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, ये सब उस टेबल के लिए हमारा डेटा हो गया. इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा. इंफॉर्मेशन हमें कब मिलती है? इंफॉर्मेशन हमें डेटा से ही निकाल के लेनी है. तो डेटा को जब हम प्रोसेस कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे लिए हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना रिजल्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? देखिए, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. हर सब्जेक्ट में जितने भी आपको मार्क्स मिलते हैं, वो सारे मार्क्स अलग अलग एक डेटा कंसीडर किए जाते हैं. अब आपको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं, आपको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं, आपको साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं, ये सारे मार्क्स आपके लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स तो आपके लिए डेटा कंसीडर किए जाएंगे. ओके. और आप लोग अपने रिजल्ट को किस तरीके से फाइंड करते हैं? इस तीनों सब्जेक्ट के डेटा के ऊपर जब आप कैलकुलेशंस अप्लाई कर दोगे, उन सारे मार्क्स को ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद आप कंपेयर करोगे कि आपके मार्क्स 35% से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप पास डिक्लेयर हो जाते हैं, और अगर 35% से कम मार्क्स हैं तो आप फेल डिक्लेयर हो जाते हैं. तो अलग अलग मार्क्स जो हमारे लिए डेटा थे, उन डेटा को हमने ऐड किया, प्रोसेस किया, और उसके बाद हमें रिजल्ट मिला. ये जो रिजल्ट होगा, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि हम पास हुए या फिर फेल हुए. तो डेटा सिंपल फैक्ट्स का कलेक्शन है जिनका कोई मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इंफॉर्मेशन का हमेशा कोई ना कोई मीनिंग होगा. इंफॉर्मेशन simple, we can say information is meaningful data or information is processed form of data. So data simple facts and information is processed form of data. There are some basic functions of digital computer. Digital computer is normally the computer we are using in our homes, in our offices, in our game parlors, etc. These are the digital computers. So every digital computer carries out 5 basic functions. The first function is input. Input means uh, every digital computer accepts data as input. हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, वो सब किसी ना किसी डेटा के ऊपर काम करेंगे, और वो डेटा ही हमारे लिए इनपुट कंसिडर किया जाता है. डिजिटल कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा को. इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी एंड रिकॉल द सेम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. हमारे पास डेटा और हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डिजिटल कंप्यूटर उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है, वो हमें वहाँ से हम ले सकते हैं उस डेटा को. थर्ड फंक्शन है प्रोसेस. डिजिटल कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और उसे मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करके देता है. तो सो देन इट प्रोसेसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट फंक्शन इज आउटपुट. Output function is what? Output function is that our computer communicates the information to us as output.
जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे लिए हमारा आउटपुट कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल, एंड द डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोल्स ऑल द 4 above functions to properly work for a purpose: input, storage, process, and output. All these functions are controlled by digital computer also. तो पहला फंक्शन हो गया इनपुट फंक्शन। इनपुट कैसे देंगे हम? डेटा हमारा इनपुट की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो हमने स्टोर किया हुआ है उनके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोसेसिंग करके, अपनी कैलकुलेशंस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी वो हमारे लिए हमारा आउटपुट कंसिडर की जाएगी। और इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम भी डिजिटल कंप्यूटर करता है। तो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर के 3 फंक्शंस हो गए: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट इज डेटा। We generally provide data to our computer as input form. Then we process that data on the basis of the programs stored in our memory, or the instructions stored in our memory. And the third function is output function. This output we have achieved after applying processing on the data. So in simple words, we can say that our computer works in three parts. We have to provide data as input, then we have to apply some processing on that input, and then we will get our output as the result. This is a computer definition. There are many ways you can define a computer. There are 2 definitions I'm giving here. First definition is: computer is an electronic device which automatically accepts and stores input data, process that input data, and then output the processed results in the form of reports or in the form of results. Means हमारा कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है और स्टोर करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमें हमारे आउटपुट्स प्रोवाइड करा देता है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई कंप्यूटर की, और एक जनरल डेफिनेशन हमारे पास क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसी को हमने एक सीक्वेंस में लिख दिया है, और वही हमारी कंप्यूटर डेफिनेशन बन गई है। अब कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किस तरीके से काम करता है, 3 स्टेप हमने अभी पढ़े थे। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो 3 स्टेप्स को ही हम यहाँ अपनी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा एज इनपुट। डेटा इनपुट की तरह लेगा, process that data on the basis of programs stored in its memory. मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम स्टोर्ड हैं उनके बेसिस पे वहां पर प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा, हमें हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डेफिनेशन क्या हुई? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा एज इनपुट, process that data on the basis of programs stored in its memory, and gives input information as output. तो कोई भी डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशंस करेक्ट हैं। दोनों डेफिनेशंस को हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की फॉर्म में डिफाइन किया है। अब कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स वेरी फास्ट, विच वर्क्स वेरी एक्यूरेट। दिस इज नॉट द डेफिनेशन. Definition is only in these 3 basic terms. तो अगर आप डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्यूटर की डेफिनेशन में लिखेंगे तो वहाँ आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, खाली कंप्यूटर डेफिनेशन। इफ you people have any doubt, then you can ask your doubts on the WhatsApp group. So that's all for today. Thank you.